Uh, so good afternoon, everyone. Uh, uh, I mean, it's an honor to be part of the Earth Summit, where leaders of innovation are here to make the agriculture, the India's rural ecosystem, uh, come together through tech-led products. And that is where we are coming in from. And I'm sure everybody here is bringing some sort of solution in the form of technology to enable agriculture India or something known as rural India. But as you see, there's always a challenge. For any tech product that we see, you see there's a challenge, there's a gap. And that gap is basically reaching the right audiences. क्या हम लोगों तक पहुंच रहे हैं with the right messaging? That is one challenge. And that's why I wanted to bring it to you that what TamMedia research can bring in. This is where our research practices comes in place. It helps you with brands and solutions to reach right target audiences, be it your farmers, be it your distributors, be it your retailers. That's where we come in place. Now, let me tell you how we harness the insights. This is where the voice and the messaging matters a lot. Let's say you being an entrepreneur, you being a product-led solution developer, where you have some technology that helps the entire farmers community as a whole, and you don't know who are the influencers, who are the gatekeepers, who matters a lot. So what is their voice, what are they looking at, what is the sentiment behind that? And that is where you need tracking, that is where you need to position yourself. So addressing these challenges with the help of media is where we at TamMedia Research enables you. So it's like we are not here to pitch something, but we are here to enable you and facilitate you in terms of your communication mix to the right audience, to the relevant audience, and ensuring that whatever technology that you're contributing is relevant and is enabling to the end users, to your target audiences. So here's a bit introduction. We were the pioneers in establishing exposures, be it in the form of paid media or be it in the form of earned media. So whether it is a government policy, whether it is a technological solution, or whether it is a technological adoption, how would you gauge that whether this particular solution is helpful to a particular audience? There is a gap. This gap needs to be addressed through certain research. And this research and techniques and tools is something that we are bringing on this table. And this will help you to enable, whether it is in the form of your advertisements or whether it is in the form of news. You need to know how the category is doing. You need to know who are the players in this market. You need to know what are the trends. And one of the important aspect of today is media, how media is shaping these perceptions. When we talk about Earth Summit, today, how many people feel about this particular topic? It is the same feeling that goes towards whatever technological solutions that you're bringing on the table. And hence, it is important to track these solutions, align yourself with government regulations, align yourself with whatever government policies and procedures and frameworks are in place. So this is where we are coming in. And what you see in the background is, just go to the next slide. Yeah. So why rural India is important today is because the technology adoptions at the rural level is very low. And then there are a lot of gatekeepers. One of the important aspect is the misinformation. So if you see this information, misinformation spreading about technology, you need media to have it go across the markets and approximately shape those perceptions. The right messaging is very important. That is where we come into picture. So this is how Icona as a division helps you in enabling those news gaps and enabling you in finding those research frameworks. We help you to collect those data. We help you to track those media. We are the enablers across print, TV, radio, digital, and that's how we formulate the entire process for collecting information about what's happening in the technological background. If you see the national dailies, it's all saturated, but the regionals, that's where it is important for technology to make its space and to
eradicate the gap of misinformation. And that's how it will enable farmers or your target audience that your technological solutions are reaching to the right audiences. Yeah, this is just a case study, case solution. You can see the slides running at the background where we have worked with a couple of clients to enable them how these gaps and solutions can be bridged through various solutions that we have. I just hand it over to my colleague Harish, who will take it from here on the on ground setup that we do from brand health point of brand health perspective. Good day, everyone. So far, we have seen how our offerings span across PR, investment intelligence. And now that we are excited to present to you our revolutionary brand health tracks powered by strong on-ground field analysis. But the real magic lies in our unique proposition where we bring together brand health, PR share, and ad expenditures as well. So into one holistic connected picture, thinking of it as finally giving our brand the data chance to talk to each other. So now, since we operate in a country as beautifully diverse as India, where consumer expectations shift every few kilometers, culture, environment, education, income, media habits, and consumption patterns. Everything varies and everything influences how people perceive a brand. This is exactly where our brand health tracks steps in. We continuously monitor movements on your brand's awareness, consideration, advocacy, and competitive standing, helping you decode your strengths, gaps, positionings, etc. Next slide. So in our model, we focus on identifying new growth opportunities by studying category drivers and spotting consumer white spaces. We track competitive benchmarks using KPIs and KPIs like saliency and recommendation, understand brand perception through imagery, and evaluate marketing effectiveness through campaign diagnostics. Next. Now imagine all of this, whatever I spoke, integrated with ad spend moments across media and earned PR share as well. This fusion doesn't just give you metrics, it gives you the why behind the moment. That's what makes our offering a powerful one-stop system for smarter business solutions. This defines future growths, strategies, and eliminating blind spots. Next. In the final moment, let me just quickly walk you through what this looks like in our dashboard on a single view kind of a presentation, as you can see on the screen, wherein we kind of give you an overall dashboard wherein we will calculate the awareness for your brand along with consideration, recommendation, and various other parameters. Each of this, we will monitor how the needle for each of these parameters moves when I link it with the ad spend for that particular month and for the PR share of you for that particular month as well. So, next slide. So we also track next one again. We also track brand imageries month on month or quarter on quarter, helping you understand whether your campaign positioning is landing right and whether competitors may be scoring high. As you can see on the screen, where green cells represents where my brand is doing better than my competition brands, and the red cells represent where the competition brands have a better imagery section as compared to my own brand. All this comes, next one. All this, again one, next. All this data, whatever we can put into the slide, looking at the time constraint which we have, each of these parameters we can look at on multiple filters. We can deep dive into gender, NCCS, age groups, geographies across the country, which gives us a complete 360-degree understanding. Now, this is not just limited to only the urban population. This is also, we are also accessible to all kind of tiers. We are accessible to rural area as well. So yeah, that's all from our side within the time limit. As I can see on the screen, I'm running out. We're happy to take you through some sample studies where ad spends, PR share, and voice of brand together paints a very beautiful picture. And yeah, these are our contact details flashing on the screen. You can take a note of it. You can find us around in case we have to just explore more on whatever we have just discussed. That's all. Thank you.
Thank you so much, Rohit. Thank you. We now move on to our next session. The next session is a product showcase by Online PSB Loans. Mr. Dharmik Chauhan from Online PSB Loans. I would request him to please come on stage. A round of applause, ladies and gentlemen. आप सभी का धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए हैं इस अर्थ समिट में। मुझे यहाँ पे आपको ये एक ईआरपी सॉल्यूशन जो कि एक लोन प्रोडक्ट है, जो कि किसान के लिए भी है, और यू कैन से जो भी एनिमल हस्बेंड्री या तो आपका डेयरी का बिजनेस जो कर रहे हैं उन सभी के लिए भी है। सो एक्चुअली आज तक क्या है, इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि हम कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग नहीं देखे हैं। हम क्या देखे, कोई भी असेट के सामने लोन लेते हैं, मकान के सामने हो गया, किसी के भी सामने हो गया। सो नाउ वी आर मूविंग इनटू अ कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग, जहाँ पे आपका कोई भी इनवॉइस होगा वो फाइनेंस होगा, एंड इट्स अ प्रूवन इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्चुअली आप देखोगे ना तो ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। ये एक्चुअली लाइव इंफ्रास्ट्रक्चर डेमो है, इट्स नॉट अ प्रोटोटाइप और समथिंग। सो अभी जो ये आप जर्नी देखने जा रहे हो, ये एक्चुअली कोई भी ईआरपी सिस्टम, जैसे कि डेयरी है, तो डेयरी भी अगर डिजिटली आपको डेटा प्रोवाइड कर पा रहा है तो आपको कहीं पे भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट्स में आप अपने खाते में पैसे ले सकते हो। सो ये हमने एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है, एंड इट्स अ प्रूवन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आई विल गो थ्रू विद द डेमो फर्स्ट। जब आप कस्टमर है वहाँ पे लॉगिन करेगा, अपना मोबाइल नंबर डालेगा, और अपने मोबाइल नंबर में जो भी ओटीपी आएगा वो एंटर करेगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे उसके ईआरपी सिस्टम का नाम, जैसे आई एम टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ अ डेयरी, आपकी डेयरी का नाम यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ से डेयरी सिलेक्ट करो। दीज आर कंसर्ट, ये एक तरह का आप कंसर्ट दे रहे हो आपका डेटा एक्सेस करने के लिए। उसके बाद दीज आर द वेरिफिकेशन, ये भी डिजिटल है। यहाँ पे भी आपको सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही डालना है। तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद यहाँ पे आपका डेयरी में जो भी आपका एक कोड दिया होगा आपको, या भी जो भी आपका नंबर दिया होगा, वो नंबर आप डालोगे। ये डिजिटली ओटीपी भेजेगा डेयरी में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वो डालने पे आपका डेयरी का पूरे 1 साल का जो भी डेटा होगा, या आपके ईआरपी सिस्टम में जो भी डेटा रहा होगा, 1 साल का कितना आपने दूध भरा, कोई भी, आई एम टेकिंग अ लोएस्ट एग्जांपल, तो वो सारा डेटा मुझे यहाँ पे फैच करके देगा। और उसके ऊपर बैंक अपने जो एक क्या बोलते हैं पॉलिसी, जिसके तहत वो लोन देता है, वो रूल रन करेगा। वो रूल रन करने के बाद आपको वो इंस्टेंट ऑफर दे देता है लोन का। जहाँ पे बड़े लोन्स होते हैं, जहाँ पे डेयरी के अलावा लोन होते हैं, वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट वगैरह रहते हैं। तो ये बैंक स्टेटमेंट भी डिजिटली फैच करता है। चाहे बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड करो, चाहे अकाउंट एग्रीगेटर से लो।
ये सब प्रोसेस होने के बाद ये आपका लोन अमाउंट बना है, आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा ये पूरा आपको स्क्रीन पे दिखेगा। एंड उसके बाद ये एक तरह का सैंक्शन लेटर है, बट ये डिजिटल सैंक्शन लेटर है एंड इट्स एज पर न्यू डीपीडीपी गाइडलाइन जो अभी नोटिफाई हुआ है, उसके तहत पूरा का पूरा की फैक्ट स्टेटमेंट, आप उसको हिंदी में सैंक्शन लेटर या बोल सकते हो। ये खत्म होने के बाद अब आपका लोन अग्रीमेंट का प्रोसेस होगा। सब जगह लोन लेने जाते हैं तो क्या करते हैं कि लोन में डॉक्यूमेंट पे साइन करवाते हैं, बहुत सारे सिग्नेचर होते हैं। यहाँ पे वो एक ओटीपी से हो जाएगा, आधार बेस्ड ओटीपी डालने पे पूरा का पूरा साइन हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा इंटरनेट बैंकिंग से आपका रीपेमेंट जहाँ से होने वाला है वहाँ से हम इन-एच मैंडेट भी क्रिएट कर देंगे। ये होने के बाद ये आपका लोन हो गया सैंक्शन। अभी लेट सपोज आपने दूध भरा है लेकिन आपको पैसा नहीं मिला है, या फिर आपने किसी ईआरपी सिस्टम से माल लिया, जैसे कि अभी आज डेमो में आपने देखा हो, नीचे लॉन्च में भी जन औषधि केंद्र पे बात हुई थी। तो दीज आर द जन औषधि केंद्र जिसका ऑलरेडी इसके साथ इंटीग्रेशन लाइव है, इट्स अ ईआरपी सिस्टम। सो उसके बाद कस्टमर आके यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर डिसबर्समेंट करेगा, अगेन वहाँ से लेटेस्ट जो भी इनवॉइस आउटस्टैंडिंग होंगे वो फैच हो जाएंगे और फैच होने के बाद कस्टमर को इस इनवॉइस के सामने कितना पैसा पे करना है वो वहाँ पे डालते ही वो पैसा डायरेक्टली जो ईआरपी होल्डर है, जैसे डेयरी को आपको पैसा देने तो वो डेयरी के अकाउंट में जमा हो जाएंगे, या ईआरपी होल्डर है तो उसके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। सो इस तरह से विद इन दैट पर्टिकुलर लिमिट, मान लो कि आपको 5 लाख का लिमिट मिला तो वो 5 लाख के लिमिट में आप कितने भी इनवॉइस आप फाइनेंस कर सकते हो, कितने भी बिल फाइनेंस कर सकते हो। सो ऐसे आप मल्टीपल टाइम, 1 साल का लिमिट दिया है तो आप 1 साल में इसको मल्टीपल टाइम कर सकते हो। इट्स एक्चुअली अ न्यू वे ऑफ फाइनेंसिंग द लोन। आई गेस इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स। Hi, thank you so much, Darshan, for sharing the whole journey of your product. It was really insightful and interesting to hear you. So, audience, here we are. We are beginning with the next product showcase, which is by CIBIL, where we have Mr. Nilay Patel, AVP of CIBIL, who will be taking us through the journey of Grameen score presented by CIBIL. May I please request you all to give a round of applause for Mr. Nilay Patel. गुड आफ्टरनून, मेरा नाम नीलय पटेल है। आई एम बेसिकली बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद और मैं अभी फ़िलहाल कोऑपरेटिव बैंक्स और NBFCs मैनेज कर रहा हूँ विद ट्रांसयूनियन सिबिल, एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस लास्ट 3 years. सो जस्ट टू गिव यू लिटिल बिट ऑफ आइडिया अबाउट सिबिल, काफ़ी मतलब वैसे तो इतना इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल इट्स अ वेरी जेनरिक नेम इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंडस्ट्री. Because what basically TransUnion CIBIL does is it bridges the gap between the person who wants to take a loan and the person who is the lender. So कर्जा लेने वाले और कर्जा देने वाले के बीच में जो gap होता है, basically the organization bridges that gap. So there are various solutions for which TransUnion CIBIL is famous for, but mainly मतलब आउट ऑफ मैनी ऑफ द सोल्यूशंस विच यू बेसिकली नो इज अबाउट द क्रेडिट रिपोर्ट, जिसे हम कहते हैं ट्रांसयूनियन सिबिल की रिपोर्ट. उसके अलावा द नीड ऑफ द आर, द फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और RBI ने लिया है, उसको ध्यान में रखते हुए there is a score that we have developed exclusively for the rural and semi-urban part of the country, which is called the Grameen score. So same like a normal CIBIL score that ranges between the range of 300 to 900, Grameen score is also between the range of 300 to 900. Now what is the differentiator between a normal CIBIL score and a Grameen score, where the numeric quantification criteria is the same between 300 to 900, then what differentiates the same, the both? So basically ग्रामीण स्कोर जो होता है उसमें हम माइक्रो फाइनेंस और कंज्यूमर रिपोजिटरी, दोनों रिपोजिटरीज का हम कॉम्बिनेशन लेके भी, देर आर अराउंड मोर देन 700 एल्गोरिदम्स दैट रन इन द बैक एंड, एंड बेसिस दैट वी जनरेट अ स्कोर.
Whereas a normal consumer score, which you and us, we all have, that is only taken into consideration our अपना जो इंडिविजुअल जो लोन होता है, लाइक अवर क्रेडिट कार्ड्स, अवर होम लोन, या यू कैन से two-wheeler loan, any consumer loan that we take into the market, we only take those loans into consideration. But when it comes to self-help group and joint liability group, वो जो loans होती हैं उनका consideration हम एक normal CIBIL score में नहीं लेते हैं. Whereas in Grameen score, we take even the self-help group and JLG into consideration as well. So that differentiates, that was the basic differentiator between a Grameen score and a CIBIL score. Apart from that, आज हम जितने भी आज बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी होंगे कि हु वुड बी लाइक कि मुझे ट्रैक्टर लोन चाहिए या केसीसी लोन चाहिए, या बहुत सारे जो हमारे फर्टिलाइज़र और सीड्स के लिए जो अलग अलग टाइप्स के हम एग्रीकल्चर लोन्स लेते हैं. सो फॉर दैट अब तक बैंकर्स वर ओनली रिलायबल वॉज रिलाइंग अपॉन द CIBIL स्कोर. Now they can also avail Grameen score to deep dive even further और थोड़ा और granular और detailed insights about that individual. So basically CIBIL करता क्या है? From deriving from all these scores, हमने commercial में अगर आप देखेंगे तो we give rank, consumer में we have score, so on and so forth. With MFI we also have score. So what does the main purpose of it? So आज for example मैं एक बैंक में कहीं गया for loan, और I have inquired for a car loan, for example, 10 lakh rupees की. How would that banker know कि मेरा दूसरी बैंकर्स के साथ जहाँ पे भी मैंने अपनी दूसरी लोन ले रखी है वहाँ पे किस तरीके का मेरा परफॉर्मेंस है वहाँ पे? So how would I get to know? I think उस बच्चे को CIBIL score उसका मतलब he is very disturbed about his CIBIL score, very concerned. So basically, how would the other financial institution know कि how am I performing in my current portfolio? So that is where CIBIL comes into the picture, जहाँ पर sorry, it's all right. So basically, in a very layman's term में अगर मैं समझाऊँ तो फाइनेंशियल जन्म कुंडली कहलाती है CIBIL. जैसे हम सबकी एक जन्म पत्रिका होती है, वैसे फाइनेंशियल जन्म कुंडली इज इक्विवेलेंट टू अ CIBIL, जहाँ पर आपने कहाँ कहाँ लोन लिया है, कितने अमाउंट का आपका एक्सपोजर है, और पिछले 36 महीनों में आपका परफॉर्मेंस कैसा है. सो दैट इज बेसिकली टेकन इनटू कंसिडरेशन, and basis that the other financial institutions and the entire banking ecosystem can get to know that how are they performing. So on that note, if there are any concerns or any doubt or any queries that you have with regards to CIBIL, please feel free to ask. It is already live with effect from 1st of October, ma'am. So any financial institution, they can avail this Grameen score. Cooperatives, RRBs, NBFCs, public sector, private sector, each and every if I'm performing well on my credit cards and my home loan and my two-wheeler loan, but if I have taken a JLG loan or an SHG loan, if my performance is poor over there, then my entire Grameen score goes for a toss. So वहाँ पे definitely Grameen score will go down, and that is exactly the reason why we have introduced this.
बिकॉज कई बार क्या होता था कि सेमी अर्बन और रूरल पिन कोड में रहने वाले लोग जो अपने टू व्हीलर और वो जो नॉर्मल कंज्यूमर लोन्स में दे वर परफॉर्मिंग वेरी वेल, बट माइक्रो फाइनेंस में दे वर डिफॉल्टिंग, और इज द अदर वे अराउंड, they were performing very well on repaying microfinance loans on timely manner, but 6 महीने से credit card default है. So that is the reason this this score has come into the picture, where we can give a combination and basis that the underwriter can get a clear idea. So that completely depends upon how the territory is, because in banking sector, as we all know, there are certain high risk pin codes as well, red flag pin codes. So if अगर वो particular red flag pin code से है तो obviously the entire territory would go for a toss, but उसके आसपास भी है तो it completely depends upon the performance. So जैसे मैंने कहा कि the score, whether it's a normal CIBIL score or a Grameen score, it is completely based upon the repayment. So बहुत सादी लैंग्वेज में बताऊँ तो अगर लोन लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा. So if there is any delay or any kind of default, it will definitely impact the score irrespective of the territory or irrespective of the product. Sorry, sir? CIBIL score and Grameen score. So CIBIL score, as I mentioned, it only takes care of your individual borrowing that you have taken, like your credit card, your personal loan, your car loan, auto loan, your home loan, LAP, those kind of things. Whereas in Grameen score, we are taking a combination of all these kind of loans which I just mentioned and JLG and SHG, microfinance loans. On that note, thank you very much. Pleasure. Thank you so much, Nilay, for simplifying the process of Grameen score. So with this, we come to the last product showcase of the day. So we have Advick AgVenture. We have Darshan from Advick AgVenture, who will help us to understand the satellite-powered services for precision farming. I can use this mode. PPT is ready. PPT. I will Good morning, ladies and gentlemen. I am Darshan Tank. I am presenting Advick AgVenture. Sorry, 1 second. Hello. Good morning, ladies and gentlemen. I am Darshan Tank. I am presenting the Advick AgVenture satellite-based precision farming. In the nowadays, we are looking the next generation farmers. They are not able to go for their farms. They have no time to reach their farms and solving the farming problems. That's why we are suggesting and develop the satellite-based precision farming. Can you please next slide? Nowadays the VR statement and the VR found the problems like tech brief and problem unpredictable weathers and some new pest and disease and some new soil dirt disease. That's why they presenting the efficient resource and management. The traditional farming increase the cost of farmer and reduce their cost and their prices for this farm. And the tech brief our Advick precision farming platform use the satellite AI and the data analytic to deliver the real-time insight and optimize the crop management, boosting productivity sustainable in agricultural farming. मैं सीधी भाषा में साहब कहूँ तो कहीं यहाँ फार्मर्स मैंने देखा है कि कहीं बिग विलेज से भी लाए हुए लोग हैं, तो उनको मैं समझाने के लिए अगर सीधी भाषा में हिंदी में कहूँ तो मैं हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो ये AI है, हमारा जो ये एप्लीकेशन है वो फार्मर को न्यू जनरेशन के लिए अपडेट करने के लिए करा है
क्योंकि वो अभी फार्मर्स के पास कई बार टाइम नहीं होता कि उसको उसकी फार्म पे जाए और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करे। तो हम क्या करते हैं कि उस फार्मर से कुछ डेटा लेते हैं, जैसे कि उसका डेट ऑफ सोइंग, क्रॉप क्या है और उसका लैंड कहाँ है। उसके हिसाब से हम उसके बेसिस पे हम सैटेलाइट के थ्रू जो इमेज जनरेट करते हैं और उसके एआई के थ्रू जो हम इमेज जनरेट होता है उसको डेटा एनालिटिक करके, और हमारे पास कुछ एग्रीकल्चर के पीएचडी किए हुए जो टेक टीम है उसके थ्रू हम डेटा एनालिटिक करके वो फार्मर को उसके बेसिस पे एक परफेक्ट रिपोर्ट तैयार करके देते हैं, जिसके अंदर उसका सोयल हेल्थ, जो उसकी फार्मर की जो सोयल कंडीशन होती है सोयल हेल्थ देता दिखाता है, उसका जो सोयल मॉइस्चर होता है, जो फार्मर उस टाइम पे क्या मॉइस्चर होना चाहिए नहीं, उसके जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप सजेस्ट करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग सूटेबल क्रॉप कौन से होंगे। लाइक अगर हम सौराष्ट्र और मिडल गुजरात की बात करें, अगर सौराष्ट्र की बात करें तो ग्राउंड नट कॉटन वगैरह उसके अकॉर्डिंग टू क्रॉप है जो उसके सूटेबल करते हैं। अगर हम मिडल गुजरात में आए हैं तो यहाँ कई बार टोबेको है, राइस है और क्यूमिन है जो उसके इस एरिया के सूटेबल है। इस बेसिक पे हम फार्मर को उसके उसके फ़ोन में वो जहाँ पे भी हो, वो यहाँ चाहे उसको फार्म आने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे कहीं बाहर भी रहे तो उसके एप्लीकेशन में उसके फार्म की टोटली रिपोर्ट आ जाएगी। उसकी सोइल के हेल्थ क्या है, कंडीशन क्या है, उसका वो कभी उसको सेकंड इरिगेशन देना चाहिए, कभी उसको को वो सब कुछ उसमें आ जाएगा। सेकंडली हम कैन यू प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। This is the our portfolio and the product of the picture of apps. This is our app whole screen. This first screen, if you download the app in your mobile, then you saw this first application. And total we have 10 service to give the farmers. अभी हम 10 सर्विस फार्मर को दे रहे हैं, जिसमें क्रॉप हेल्थ आ गया, इरिगेशन आ गया, क्रॉप कैलेंडर आ गया, लास्ट में उसने कब कौन सी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर यूज़ किया होगा वो आ गया, उसमें उसके फार्म में कितने, उसके फार्म के अंदर कितना फर्टिलाइजर अभी है और उसको क्या डालना चाहिए और क्या डालना नहीं चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको एक लिस्ट बना के देते हैं, जिसके बेसिक्स पे उसका जो खर्चा होता है जो फार्मर का फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के ऊपर से वो कम होता है। इसलिए उसका जो कॉस्ट जो फार्मर उसको क्रॉप के ऊपर जो प्रोडक्ट के ऊपर जो खर्चा करता है, जो इन्वेस्ट करता है, उसका क्रॉप रिड्यूस होता है। कैन यू प्लीज नेक्स्ट। Our company is a vision to revolutionize the global agriculture environment by technology and sustainable farming practices and ensure the security for future generation. हमारा जो विज़न है वो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा कई विज़न है कि अभी जंग की जनरेशन के फार्मर्स है, जो हमारे फादर है और हमारे जो ग्रैंडफादर है, वो ग्रैंड पेरेंट्स है, वो तो फार्म पे जा ही रहे रेगुलरली। लेकिन जब हमारी जनरेशन आएगी उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो अपनी लैंड पे जाए और अपने बारे में, उसके फार्म के बारे में कुछ भी याद रखे या कुछ भी उस पर देखे और कुछ भी इसका टाइम करे। इसलिए हमें उस जनरेशन के लिए हमने वो क्या किया कि हमने एक एप्लीकेशन बनाया जो सैटेलाइट बेस्ड इसरो के साथ काम किया कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम उसको मोबाइल में ही हम सारी उसकी क्रॉप डिटेल्स दे देते हैं कि चाहे उसे कुछ भी उसको चाहिए, उस अगर उसके क्रॉप में अगर सर्टन कुछ एरिया में उसका क्रॉप डैमेज हो रहा है तो वो भी सैटेलाइट के बेसिस पे हम उसको बता देंगे कि इस एरिया में तेरा इतना क्रॉप डैमेज हो रहा है, और उसका सॉल्यूशन भी हमको उसको बताते हैं ऐप में। और हमारा जो ये ऐप है वो हम इंडिया के सारे स्टेट के जो भी लैंग्वेजेस है उसके अकॉर्डिंग उसके लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। यानी अगर गुजरात में है तो गुजराती में अवेलेबल है, महाराष्ट्र में जाए तो मराठी में अवेलेबल है, तमिल में अगर आप तमिलनाडु में जाए तो वहाँ तेलुगु और तमिल में दोनों में अवेलेबल है, और जैसे मलयालम, कन्नड़ एक्सेट्रा सारे लैंग्वेज में हमारा ऐप अवेलेबल है। In nowadays we are looking the problems which are facing the farmers is inefficient resources, unpredictable crops, and lack of the guidance, the perfect guidance. In nowadays what the farmers doing, अगर अभी के टाइम में फार्मर क्या कर रहे हैं कि अगर उसने दो भाई वो डीएपी वगैरह आता है, यूरिया वगैरह आता है, उसने दो अपने खेत में 2 डीएपी का बैग डाला तो मैं और उससे ज़्यादा यील्ड लेने के लिए क्या करता हूँ, 3 डालता हूँ। वैसा नहीं है। अगर आपको आपके ज़मीन के आपका जो लैंड होता है उसके हिसाब उसका आपका पास सोल मेजराइजेशन हो और परफेक्ट आपको कोई भी गाइडेंस देने वाला हो तो आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन वगैरह जो
पीक एलिमेंट्स जो क्रॉप को चाहिए होते हैं वो ऑलरेडी हमारे फार्म में, ऑलरेडी हमारे फील्ड में, हमारे खेत में अवेलेबल होते हैं। फिर भी हम उसको एक बार बार देके और हमारा जो फार्म है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम करने में लगे रहते हैं। इसके इसके लिए हमने क्या किया कि हमारा जो सॉइल टेस्टिंग होता है, जो प्रैक्टिकली जाके फार्मर को करना पड़ता था जिगजैग मेथड से, उसको हमने क्या किया, इजी बना दिया और वो हमने मोबाइल ऐप पे ला दिया, जिसके हिसाब से उसका फर्टिलाइजर का कॉस्ट रिड्यूस होगा। सैटेलाइट बेस्ड रिसर्च फार्मिंग एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि हम जो फार्मर्स के होते हैं, मैंने आपको बोला NPK और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, वो हम सब एप्लीकेशन के थ्रू एनालाइज करके वो फार्मर को बताते हैं। और सेकंड में ड्राइव एंड सस्टेनेबल फार्मिंग है, होता है क्रॉप हेल्थ। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर किसी का सर्टन एक पर्टिकुलर एरिया में उसका क्रॉप डैमेज हो रहा है तो हम उसको बताते हैं, वो हिसाब से होता है। और थर्ड है यूजर फ्रेंडली एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म टेक एडोप्शन। हम जो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सारे लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसलिए यूज़र फ्रेंडली है। अगर कोई भी फार्मर यहाँ का हो या बाहर का हो तो उसके लिए इजी होगा कि उसकी लैंग्वेज में एप्लीकेशन हो और जिससे उसको बेटर तरीके से उसको यूज़ कर सके। इसलिए हमारी एप्लीकेशन है वो उसके हिसाब से यूज़र फ्रेंडली बन जाती है। देन आफ्टर उसके जो यूज़र के लिए जो भी उसमें एप्लीकेशन और सिस्टम से वो बहुत यूज़र फ्रेंडली हो, बहुत इजीली आप ऑपरेट कर सकते हो। उसमें आपके हिसाब से सारी प्रॉब्लम अपने आप को मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी और आपको रिमाइंडर देती रहेगी। जैसे हम किसी भी चीज़ का रिमाइंडर रखते हैं, वो बार बार हमें रिमाइंडर देता है। वो हमारे हर अल्टरनेट वीक आपको रिमाइंड करता रहेगा कि आपका ये रिपोर्ट है और ये आपको डालना पड़ेगा और ये आपको फार्म के लिए करना पड़ेगा। Now our targeting market is small to medium farmers, agriculture cooperative organization and agriculture input suppliers. अगर आप फार्मर की बात करें तो यहाँ पे कहीं हम छोटे बड़े फार्म को टारगेट कर रहे हैं जो डायरेक्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सेकेंडली हम एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स यानी FPO, NGO, कुछ भी FPO, NGO वगैरह साइट वगैरह ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर बिजनेस टू कॉर्पोरेट, यानी कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी है जैसे FPO हो गया, नाबार्ड हो गया, उसके साथ काम कर रहे हैं। B2B यानी हम बिजनेस टू बिजनेस, कोई भी कंपनी या कोई भी कंपनी हमारे साथ काम करनी तो हम पूरा उसका एप्लीकेशन उसके मोबाइल में, उसके एप्लीकेशन में या उसकी वेबसाइट पे दे देते। तो सारी सिस्टम उसकी तो दिखाता ही है, लेकिन सारे हमें उसमें एड ऑन हो जाता है हमारी प्रोग्रामिंग। जी, हमारे जो सारी सर्विसेज वो ऐड हो जाती है, उसको अलग लीजिए, चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो फार्मर कोई भी वो दूसरी कंपनी के एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है तो वो उसको में ये एप्लीकेशन आसानी से इजीली ऑपरेट कर सकता है। थर्ड हमारा मार्केट है B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट है, नाबार्ड हो गया, दूसरा कहीं प्रोजेक्ट है जो PM किसान योजना वगैरह को योजना में गवर्नमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं। जैसे अभी हम लास्ट
तो मंथ में जब सुना होगा कि बिन बोला ही बरसात आ गई थी सौराष्ट्र रीजन में, तो कई फार्मर के फील्ड डैमेज हो गए थे। तब गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसका जो मार्केट का जितना क्रॉप डैमेज हुआ है उसका सब कुछ करने के लिए उसने सैटेलाइट पे थ्रू अपने सब कुछ किया था कि कितने एरिया में डैमेज हुआ, कितने एरिया में डैमेज नहीं हुआ। वैसे ही हम गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट टाइप करना चाहते हैं और वो करने वाले हैं। और जो अभी फ्यूचर में हमारा गवर्नमेंट के साथ नाबार्ड या किसी पीएम किसान योजना के अंडर आएगा। और D2C है, जो डायरेक्ट टू कंपनी टू कस्टमर, जो हमारे डायरेक्ट फार्मर के साथ जुड़ रहे हैं। हम नियरली 13,000 to 14,000 फार्मर के साथ काम कर रहे हैं, जो उसने 13,000 to 14,000 फार्मर्स हमारी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और हम उसको टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है हमारे सैटेलाइट प्रिसाइजिंग फार्मिंग में। हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखें तो सैटेलाइट ड्राइविंग फार्मिंग, स्केलेबल प्लेटफॉर्म, फार्मर सेंट्रिक अप्रोच, एक्सपीरियंस लीडरशिप, प्रूवन इम्पैक्ट, फार्मर ट्रस्ट एंड सस्टेनेबल इम्पैक्ट है। जैसे भी हमने बोला कि फार्मर का हम ट्रस्ट, फार्मर के जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी टेक टीम और हमारे जो टीम के लीडर है वो सब कुछ कर रहे हैं, जो उसमें सब एक्सपीरियंस लीडर है। जैसे कि अगर आपको एग्रीकल्चर का कोई भी क्रॉप हो तो एग्रीकल्चर फार्मिंग के बेस तो एग्रियोलॉजी वाले फार्मर होते हैं, उसके बेस ऊपर काम कर रहा है। जो हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट है, जो पीएचडी उसमें सॉइल में पीएचडी वगैरह किए हुए हैं, उसमें उसका सब्जेक्ट है, उसके थ्रू हम फार्मर को गाइडेंस देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर आपको पेस्ट एंड डिजीज आती है तो उसके लिए हमारे प्रिसाइज फार्मिंग एंड बायोडाइवर्सिटीज जो साइंटिस्ट है उसके हमारे टीम लीडर में जुड़े हुए हैं। दिस इज आवर टीम। ये हमारी टीम है, जो नीतीश टाक करके है, वो हमारे फाउंडर, हमारी कंपनी के फाउंडर है। जिसमें पारुल टांक वो हमारी कंपनी के सीईओ, और अभी को जो टेक टीम लीडर है, जो एप्लीकेशन का पूरा टेक टीम का लीड कर रहा हुआ है। और एक काजिर खान है जो मैनेजर है, जो हमारे कोई भी फार्मर के कुछ भी प्रॉब्लम आए हैं तो उसके जो हमारे जो वो परफेक्ट हमारी जो टीम है उसको लीड करने के लिए, उसको गाइडेंस करने के लिए हमारे काजिर खान है, जो इसने MBA किया है फ्रॉम नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और मैं अभी मार्केट मैनेजर हूँ और मैं मार्केट देखता हूँ और फार्मर के साथ जुड़ता हूँ और फार्मर को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अच्छी फार्मिंग के लिए काम करता हूँ। थैंक यू सो मच। Yeah, good evening, Ahmedabad and everybody. Yeah, I'm from WhatsLoan. I'm a founder of WhatsLoan. This is an agri fintech company. We have been building for agriculture lending primarily from 2020. And when you look at all the agri tech products and the everything that you want to sell, whether as a product and service, the farmer, a simple question is, where is the money? Right? That money is available. That money is available with almost 28 lakh crore is available. And is available through cooperative banks. I think most of the cooperative banks must be sitting here. Grameen banks and public sector banks. They cover almost 90% of the agri lending. Private banks only take about 8-9%. And they book it as agri finance. They don't actually give it to a farmer. They find who's a farmer in a family and find that it's fitted into agriculture. So small and marginal farmers that we are talking about, there are 145 million farmers in India identified. Out of that, 120 are identified under PM Kisan scheme, where we give a 6,000 rupees credited to their account. To do that, we have identified him. That means his identity is established, his account is opened, and his land is recognized, and the Aadhaar and the land record is matched. This is the primary infrastructure that is available to us digitally. This happened few years back. I think last few years we have been receiving that money. But now government calls out that saturate this population or these families with agri credit, with a simple product called Kisan Credit Card. So this has been, this credit card, Kisan Credit Card is not a credit card, it's a debit card. You open an account, loan account, and then you give a 5-year overdraft account. And once you take it, you keep getting 10% extra every year, and you keep servicing the interest, pay back and take it again. If you pay back today, tomorrow you can draw it again, right? It meets their 3-4 cycles of the crop cycles. And this is classified up to 2 lakhs and more than 2 lakhs. Up to 2 lakhs is hypothecation of crops only. It's a declaration.
You are a person, you have land, you grow this crop, and you declare that I'm going to grow one crop, two crop, this kind of crops, multi-cropping, single cropping, and I want paddy for 2 acres. There's something called scale-up finance, which is decided by district commissioners and state government and NABARD and your, I think, sponsor bank, the state sponsor bank and the Grameen banks, DCCB, state bank, everybody participate in that. So that's a very standardized scale of finance which is available as a table, right? That was sitting in an offline mode about a couple of years back. We took that, worked with public sector banks and worked with Grameen banks. We worked with RBI Innovation Hub. You know, there is an RBI Innovation Hub in Bangalore. It's an arm of the technology arm of RBI. We were doing this on our own with the Karnataka Grameen Bank in Karnataka. We have touched about 500,000 farmers by now. So every day about 1,000 people take loan on our platform. We did a physical model. You know, it took about 15-20 minutes to do a loan, which we estimated it was taking about 8 to 12 weeks to do that loan. A farmer starts from his house, carries the paper, certain papers from him, then he goes to the land record office, takes a land record, goes to another place. He's in a village, taluk office somewhere else, and branch is somewhere else. He comes back because one thing is missing because he's not very literate. He might be literate, but he may not be very literate. So this we estimate it is going back and forth. It was taking 10% of the, if you want to borrow 1 lakh, average ticket is 1 lakh of Kisan credit card in the last few years. It takes about 10% cost to reach the bank. We call it as reaching the bank. And then when we ask them, what are you spending to invite him, process that papers, and give him a loan? It was about 2 to 3%. So 13% on a product is lost upfront. Forget about credit losses, repayment thing, interest overdues, whatever you want to talk about, that is a later problem, right? And then you are not able to give him on time. He's sitting on a season, if rain has happened in the next 3-5 days, he has to prepare the land, he needs some cultivation expenses, he needs seed, fertilizer, for some equipment, service and all that. He's not getting the money, so he goes to the mandi. And he borrows from there, meets his needs, and then comes back to the bank. Then he replaces the mandi loan. And this is circular. So now we have brought it down to 15-20 minutes there. But later in 2022, when we are found out by RBI Innovation Hub, they asked us, can you do it in 5 minutes? So now it was physical model, which branch was servicing a customer better than before. Now it is a digital model, 3 to 5 minutes. It's 2 to 3 minutes. Up to 2 lakhs, paperless, presence-less, branchless, nothing. You can sit under a tree, give a missed call, get a link, take 2 steps, identify yourself, put a land record survey number, and we take 2 steps, scale of finance is applied, eligibility is given, you say yes to that, and I give you an OTP, enter the OTP, e-sign is done on the document, 60-page document in your own language, and we connect to the core banking system, sends the money back to you. If you're an existing customer of the bank, if you're a new customer of the bank, you may have to do one biometric to open the account. You can call for a BC or a branch person, or you can go to the branch. So it's as simple as that. This is what we have achieved and touched about 1 lakh customers there. What I'm talking about is how things have changed with the digital public infrastructure like DigiLocker, land record, AgriStack, you would have heard about. There are a lot of conferences going on for AgriStack. How it is used by a fintech like us to meet the big balance sheet banks who carry a mandate of 28 lakh crore. There is money, there are borrowers, there are good farmers, but the paperwork is holding them back. So we are bringing that, getting them closer to that. Yeah, what we have done further, we have not done only Agri. A farmer is not just a farmer for Agri loans. A farmer is a family unit. He also needs a two-wheeler loan. He also needs a car loan. He also qualifies an education loan. He also aspires like somebody like others, like for a personal loan, quick personal loan. So all that we've recognized, we called it as a rural Agri family unit. So, and Grameen banks are willing to service them. Cooperative banks are willing to service them. How do you recognize them? How do you
club, agri income, a business income. Some family member is, nearest town, he's doing business. He's also paying income tax, or he's created a GST-based sales. And then, there are some children who are working in a big city and sending back some money. If you want to improve the house, build a house, buy a plot and build a house, how do you do that? So we have created a product for cooperative banks, which are semi-urban, urban, or rural folks. And we also have a platform for Grameen banks. I just want to show you the video of, can I move this? Yeah. I'll not bore you with our details. I'll play this video. Yeah, I just want to show you. Can I play this video? The first one. It's exactly what happens. This was, I think in Ahmedabad, we showed it to G20 audience. Ajay Banga was sitting there when we first shown him the real use case of 2 minutes. In MP, we were able to deliver a loan. Can you just play this? Yeah. It's self-explanatory. I think you can ask any questions. You can see the G20. It was made for G20. It is in English because the audience was English. Now you can. It is multilingual format. We had to create a multilingual format. We have not reached Gujarat yet, but we have done about 5 states. We're going for the next 5 states. One simple question. See, if I am a farmer and I've already exhausted my loan limit, then what happens? Nothing can be done. Nobody can give you a loan. Then this will give the loan. It will tell you that you can't get one more loan. It can tell. Okay, person, you have multiple lands. You took on one land. It will ask you, do you have any other land? You are good. Your bureau is clean. That captures It will ask you, you have to give more information. And it will pull the data from the land records. Real time. Everything is real time. Can you just play? Sir, the internet is quite weak. We'll not be able to play the video right now. Okay. So, yeah. So, I'm sorry about that. So, how do I manage then if I can't play the video? Okay. So, I'll go to the further. Yeah. So, any audience here on the banking side and, the agri-finance side, you can ask me a question, but I have a PPT on how we have done a cooperative bank. My product is, we have done this in 19 days. It is a pay-per-use model. No fixed cost, no cloud cost, no software license, nothing. You use per one file and you pay for that file. So because they have a good volume, it's a very sustainable model. And we are ready to invite any cooperative banks to ask us. Just about a month, it will be customized to you. Your own applications, your own policies, your business rules, credit rules, your hierarchies, your agreements in the language that you want. And we also switch languages. If you want in Hindi, English, and vernacular like Gujarati, we can do that. Yeah, I love to just switch. Yeah. This is what we spoke about. What is the market, not market opportunity for me, the need that has to be met. Forget about it. I have to show it like market opportunity. For me, I want to show it as the need that is out there. So you can look at this. Operative KCC accounts are like, we have 77 million, 120 million are the total. Like balance 50 plus million are out there not coming to the bank. How do you bring them? You can't bring them, you don't carry them. You just have to say, give a missed call to this number, you get a link and you can get a loan. It cannot be simpler than that. I don't think any two-wheeler loan, golden, can be simpler than this. It's a NeoLending platform. Okay, I'll not go here. I'll go directly. APCOP is one of our customers. Grameen Bank, you can see one of the largest customer for us. We have Union Bank as a customer. What I showed is Union Bank use case. Yeah, this we have a little bit of how it will look like, very simple hosted URL. If you give me your list of people who are going to use, in like 3-5 hours, we set up the whole thing and you are ready to sing. All you need is an internet. Because I'm hosting the cloud, software is mine, license is mine, maintenance is mine. I'm remote. I'm not even sitting with you. I'm remote. We run it from Bangalore. Anywhere in India, we can run it. So these are all typical, what we have created, and just
launched, they asked me to come and, show to others. So that's how we got this presentation done. So it's like, who are the, just, you can even profile the customer. We also can say, in 3-5 minutes, you want to know whether she asked me that question, will I get a loan or not? You have a question, you will go 3-5 times to the bank to ask that question. You don't have to do it. You get a link and you get you just call the bank. Bank will just take certain details. Certain links will come back to you because we are not supposed to take some of the OTPs and password from you. It has to come to your phone. You have to enter your OTPs that come from the Aadhaar and all that. Once you give the OTP of Aadhaar, we check your bureau, whether bureau is clean. If you're defaulted somewhere, we will know we can't give you a loan. So then we ask the land record. You enter the survey number, village, Hubli, Taluka, district and state. We pull that land record. And whatever language it comes, we translate, transliterate and match your name with Aadhaar to that. And then we say, okay, what are the crop you want to grow? I'm talking about KCC, but it can be any other loan. Like we have home loan, personal loan, pensioner loans, auto loans, and trader loans, and secured loans. Yeah. SHGs. This bank is not doing SHGs. Grameen Bank does SHGs. SHGs, they don't need any software. They just do it. Yeah. So this is typical, like, you will have, those of you who are in the banking side of it, it's a very simple thing. And we are ready to offer to anybody. You just have to sign up for 3-5 years contract. We want to stay with you for 3-5 years. That's the only commitment we want. And we can replace anybody whose whole system. Like you would have invested 3-5 years back, quite a bit of money, we can just replace them and there's zero cost to you to start with us. We call it a per file, per loan file. If it's a gold loan file, it's priced differently. Home loan is priced differently. Kisan credit card loan is priced differently. About 3-4 categories we do. And we also have a lot of costs. Like we have to pay the API cost, like, bureau cost, land record cost, satellite data cost, and your IT return access cost, and the GST return access cost. We do all of that. So these are typical, I'll just skip through. This is a typical, everything. If your photo is taken, if you take a selfie, I'll take your photo, match it with your Aadhaar. If it doesn't pass, I'll send a discrepancy to the bank. You have to go and prove that, okay, I'm looking different. Mostly it will match. 70 to 90% it will match. Even if you have aged about 10-20 years, it will still match. Name match, any discrepancy between your Aadhaar card, PAN card, driving license, anywhere, any discrepancy, we'll point it out. Somebody has to accept it. So these are typical driving license validation, PAN validation. Credit bureau is checked immediately in the first 30 seconds because without that, if you go, like after submitting all the papers, bank will say your bureau is bad, I can't give you a loan. We want to do that to you and help you fast. Completely digital. This is an assisted system for the branch of the cooperative bank, typically. Everything, address proof verification. This is a primary thing. Your identity proof, address proof, your bureau check, your IT return check, your GST, your business proof, with your Aadhaar, everything is online. Yeah, everything, whether you upload or you give us the online access, because if I send you a link, you may not have the online access to IT returns. You will send it to your chartered accountant. He can open the credentials. We will take that. Any number of guarantor co-applicants can be added if father and son are applying together. And loan eligibility is calculated instantly. You will know instantly what is the loan eligibility. So it is a file movement. There are people still enjoy, I am the proposer, somebody is the approver, somebody is the reviewer. There is a hierarchy of approvals. We have created that. This, you can see that the application, you don't have to fill with hand. It will auto-populated, auto-filled. Only a mother name is missing because the mother name doesn't come from any records. We have to make you fill that. Mother name and who are the dependents. And what is your education if you are not giving me a proof of that? This is all to be filled.